हेलो एवरीबॉडी। हाय सिद्धार्थ, आपकी ही वेट कर रहा हूँ सर। थैंक यू फॉर वेटिंग। थैंक यू सो मच। Come on, guys. If you have any friends along, just give them a reminder that the class is live and write a hi in the chat telling me that you are there. Hi, Nikita. Come on, guys. Just go and tell all your friends that the class is live. Good evening, Preetham. Hello, Sayan. Come on, guys. Everybody go and just call up your friends, tell them that the class is live. Let's have a good class today because today is something very interesting that I have for you guys. Okay, it's 4-4. Let's see. 11 people. Sir, I want to switch from Java to C++ due to less resources in C++. Also, bit difficult of pointers. What's your advice, sir? Okay. Let me just see. Okay, so you basically wanna shift your entire coding process from Java to C++, right? Okay. So guys, see, if you wanna switch languages, it's not that difficult because you can always and always switch languages. But according to me, what I think is something that the language which you are coding in, you should be comfortable with it. Understand? I am comfortable in C++ and Java both. Okay, I am comfortable in both the languages, but it doesn't mean that I don't have preferences. I obviously have C++ as my first preference and Java as my second preference, but at the end of the day, if I'm told to code a problem in both the languages, I can do it. Okay, so if I was told to teach Java, I taught it. I am being told to teach C++, I'm able to teach that also. So it completely depends on you guys on what is your preference and how you keep your preferences for coding.
I don't think that should be an issue. And if you have friends, guys, let's go and call up everybody. It's 4 in the clock. Again, the people who are there today, there are going to be 2 sessions. Both the sessions are very interesting because this is the first time I've brought both sessions as coding sessions for you guys. So both the sessions will be coding sessions today, and we will be having a lot of fun solving problems. I've made spectacular notes and we will be making them together. So I've started them and we are going to finish them together, and I'll send it to the Telegram channel. So I guess we are good to go. If you're ready for the session, write a ready in the chat. Come on, write a ready in the chat. Are you guys ready? Come on, give me a ready in the chat, guys. Okay, Cyan is ready. Okay. A lot of readies in the chat. So let's go. Hello, everybody. I'm Kabir Singh. I am an avid coder, founder at Jigsaw Minds, mentored 20,000 plus students over YouTube, and I have approximately 50,000 plus views on my videos that are floating over YouTube on different channels. So I'm kind of full-fledgedly into mentorship and educators. So I am having a teaching experience of 1 year, and the subjects that I usually take are Java, C++, data structures, algorithms, Flutter, Dart, HTML, CSS, system design, operating systems, DBMS, what else? Aptitude, etc. About the 999 rupees subscription, I've been telling you this 1,000 of times, and it is the best subscription that you can get out there if you want to start a career as a developer or you just started it. So you can get a subscription for 999 rupees and talk to the HRs who are there with the best companies. You can have a word with them, know their mindset, how they're recruiting people, what is the criteria, what is the way you can apply, and how you can have a better application where you are having your projects which are wrong, what are the wrongs in your profile, your resume, everything. So basically it's a full-fledged course for you guys, not a course, a subscription in which you're going to have live sessions. You can ask your doubts, live problem solving on CodeChef, etc., weekend projects. You can get an extra 10% off if you use the code Kabir. So this is a very good thing. And then there's CodeChef Apprentice, which is taken by Sai Avinash, and SD at Google. Is 7-star at CodeChef. Will be solving problems with 3-star coding enthusiasts on CodeChef, and also some problems that will be chosen by you. If you're new here, hit the like button, because I can see 10 likes and 16 people watching and 3 dislikes. So kind of let's build up the ratio for likes versus dislikes now, so that I can also see some more likes on the video. So if you can just go and hit the like button once, it would be really appreciated from my side, and I would really get motivated seeing that yes, you guys are liking my content. Okay, so now let's go and check what is the agenda for today. So what are we gonna actually learn today? Okay, so what are we gonna actually learn today? Basically, the first thing that we are gonna actually learn is problems, and the second thing is also problems. So basically today in the entire session we are gonna learn problems, because there were a lot of people yesterday saying, sir, do some problems, sir, do some problems. So now I've brought problems for you, and the problems which I have brought for you are basically in 2 forms. One is level 1 and one is level 2. So let me just open up my notes for you, and I'll show you the problems that I have. And people who like notes will be happy. अब सर प्रीवियस स्टूडेंट को भूल गए ना? नहीं नहीं रजत जोशी, ऐसे कैसे यार? आई डोंट फॉरगेट माय स्टूडेंट्स एवर. उसकी आपको टेंशन लेने की. आपने हाई लिखा था क्या?
I'm sorry, I missed your chat. I'm so sorry, Rajat. ऐसा नहीं होता यार मेरे को. आई एक्चुअली रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑन टिप्स, कौन कौन मेरे सेशंस देखने आता है, और मेरे को सब याद रहता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. Okay, so these are some notes which I created last night for you guys and today. So I was finding good questions and I could divide questions into three parts. One was level 1 questions, one was level 2 questions, and then there were one set of good questions. The good questions are on level, I didn't consider them to have a level which is greater than the first or lesser than anything like that. It's just mentioned over here, and other than that what I have for you is level 1 and level 2. Okay, hi Abhinash, you are also there, nice to see you. Yes, yes. Hello Vaishnavi. Okay, finally you guys have started coming back. 25 people in the you know 25 people watching. Hello Preetam. Come on guys, like का बटन दबाओ यार. 20 likes cross करते हैं. We should have a good team so that we can oppose the people who are disliking the stream. Kiran, I don't think they have aptitude till now, but I am going to launch an aptitude course pretty soon. तो वो भी बहुत मस्त होने वाला है. ठीक है. So okay, so who all know that what is the new thing and what are the new things that I'm getting for you next month? How many of you know that? Right, I know in the chat. Kiran, I guess if you're new, you can just go to the description and join the Telegram channel so that we can give you the notes and give you the updates. Will we discuss lead code problems? Not right now. I'm sorry. This is a Kickstart C++ course and it will remain till that point of contact only. Won't go further than that. Okay, let's go. Come on. So basically, guys, the level 1 problems will involve occurrence of letter O in hello world. The second question will be print string entered by a user. The third question, print every character of a string. The fourth question will be display the sentence I love coding. The fifth question, find the length of the string code verse. Sixth will be copy string S1 to S2. And the seventh question will be check if codes is present in Kabir Singh codes. Okay. So we are going to solve level 1 problems first. But before I solve the level 1 problems, I just want to introduce you guys to the coming month ka agenda to everybody. People who are watching me from Easy Code or people who have joined me from Codeverse. We are starting the Flutter course on the 1st of September. Okay? So this coming Wednesday, I am starting a Flutter course, that is app development course. If you code that app on a MacBook, I guess with some permissions, you can run the app on your iOS. If you will code the app along with me on the Windows machine, you can run your app physically on your phone. So I will be making that app with you guys. We'll have a lot of fun. So do join me. If you want to have updates on where I'm going live, when I'm going live, you can join the Telegram channel. We already have around 403 people, and that's the best part because we have come through a long distance to get these 400 people along with us. So join the Telegram channel and let's hop into the level 1 questions. Are you guys ready to solve level 1 questions? Yes or no? Come on guys, give me a yes or a no in the chat. Level 1 answers. ठीक है.
हेलो प्रियांशु माथुर, भैया स्टार्ट एप्टीट्यूड एज सुन एज पॉसिबल। यार एप्टीट्यूड करवा दूंगा, कोई सीन नहीं है सर। नोट्स भी दोगे? हाँ, इसीलिए बना रहा हूं यार इतना सिस्टमैटिकली, इसीलिए आई वांटेड टू गिव यू गाइस नोट्स, इसीलिए मैंने ये सब कुछ लिख के रखा है पहले से, ताकि तुम लोगों को, मेरे को टाइम वेस्ट ना करना पड़े ये लिखने में। मैं डायरेक्ट आंसर से शुरू करूं और तुम्हारा कोर्स आराम से खत्म हो जाए, ठीक है? Flutter course from 1 September. Yes, a lot of fun coming up in the next 1 month. Chalo, first question is finding the occurrence of O in Hello World. ठीक है? हेलो आदित्य श्रीवास्तव। ओके, तो अब क्या है कि बेसिकली वी हैव टू फाइंड द अकरेंस ऑफ ओ इन हेलो वर्ल्ड, ठीक है? इजी इनफ। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली इट्स अ लॉन्ग प्रोग्राम विद अ इजी लॉजिक, ठीक है? सो लेट्स डू वन थिंग, I'll open my VS Code first since I forgot to open it for you guys. Yeah. Yeah, done. How many of you have started the repository in GitHub? How many of you have started the repository? Give me a yes in the chat. Level 1 scripts. ठीक है? थोड़ा हिंदी में बोलो। ओके, हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। Level 1 strings. Question 1.cpp. Hello Munib, you are a little late for the class, but it's never late. So let's start. चलो, तो यार बेसिकली द कोड दैट वी हैव टू राइट इज दैट आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ओज इन हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो हेलो वर्ल्ड के अंदर हमें कितने ओ है वो कैलकुलेट करना है, करेक्ट? अब ये हेलो वर्ल्ड के अंदर कितने ओ हैं हमें कैलकुलेट करना है, करेक्ट? वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एच, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एल, एनीथिंग। हेलो वर्ल्ड में एल कैलकुलेट कर सकते हैं, एच कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट ओ फ्रॉम द कोड। सो what do you have to do? Anybody has any idea? Can somebody tell me what can we do to kind of calculate the O's in Hello World? Anybody would like to just guess? प्रीतम कुमार, 2 O हैं, I agree, but how do you code that? How do you code that? या फिर हेलो वर्ल्ड में ओ हो गया, या कोई भी रैंडम कैरेक्टर लाइक प्रीतम कुमार, if प्रीतम कुमार is a string, calculate the number of p in that string. तो वो कैसे होगा? किसी को कोई भी आइडिया है? अगर है तो बताओ. If you have an idea, take a for loop up to length, okay? Loop and if, okay? एंड वन मोर ट्विस्ट, ठीक है? हमारे को ओ भी ढूंढना है, करेक्ट? और ओ ढूंढने के बाद हमारे को क्या प्रिंट करना है कि इफ देयर इज एन ओ, तो वो फर्स्ट टाइम कहां पे है एंड सेकेंड टाइम कहां पे है. सो फर्स्ट अकरेंस ऑफ ओ एंड सेकेंड अकरेंस और लास्ट अकरेंस ऑफ ओ कहां पे है. सो इफ इट्स लाइक first occurrence is on 0 1 2 3 4 and last occurrence is on 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट शुड कम. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले
all the old students, one historic question for you. If I have such a big problem to solve, in which I have to first take a string from the user, then I have to take the letter which he wants to use, which he wants to find from the user, then I have to calculate, and then I have to print. So historic question for all the old students: what is the first thing which I should do to solve this problem? It's a big problem. So what is the first thing I should do to solve this problem? Function लगा देंगे. Okay. Come on guys, give me an idea. All the old students, what is the only one key to solve a big problem? First key which we have to put in the lock. If your problem is a lock, your first key to the big problem is what? All the old students like Rajat, Munib, hello Preeti. Okay, कोई भी exact answer नहीं दे रहा है. So your first approach should be solve this problem by converting the big problem into sub problems. तो पहला सब प्रॉब्लम हमारा है take input from user. सबसे पहले यूजर से इनपुट लो whenever you want. Now I'll be very honest, we have a lot of, okay, Nikita finally gave the answer. We have a lot of new students, and all the new students like Shitish, Saurav, Kailash, Mahabir, Neeraj, Lakshay, then Arnav, Saurav, Deepak, Azim, Bharat, all you guys are the new students to my course. And for all of you, now you are a part of Kabir Singh Codes, and whenever anybody from Kabir Singh Codes family solves a big problem, he divides the problem into small sub problems and then solves it. Understood? So let's divide our problem into sub problem, and the first thing which I have to do is declare a string and a character. So I'll write string str and char c. Now the str will be the string entered by the user, and character c will be the character which he wants to find in the problem, and this is our first step. What is our second step, or maybe step 2? And this is going to be our step 1. So what is going to be our step 2, guys? Sir has possible start output session very soon. It will so we can expect any particular date. I am not really sure about it, Kiran. You should give me some time. Let me talk to the team. I'll get back to you when I can start the aptitude course as soon as possible. 37, 39, 40 people watching and 25 likes, guys. Hit the like button because I want to see you like the stream just once. Hit the like button. Come on, hit the like button for me, and ऐसे करके 40 या 30 likes cross हो जाने चाहिए. Come on, 40 people watching, like button दबाओ, ऐसे करके 30 likes cross हो जाएंगे. ठीक है? Now moving on the second step. The second step will be first declaring the character and the string. Now taking the character as and the string. So cout enter the string and then cin str. Cout enter the character and then cin char. Very easy, कुछ मुश्किल नहीं है. Step 1 easy, step 2 easy. अब अगर मैं, if I would have come here and I would have told you directly solve the problem, बहुत मुश्किल हो जाता. कॉन्फिडेंस ही नहीं आता प्रॉब्लम सॉल्व करने का. But now I'm telling you to solve the problem in a way in which you can solve it in small problems. Now you are getting the confidence कि oh my god, I've done 2 steps of the problem and I'm just a little
steps away from my main problem. Understood? तो इसलिए हमेशा प्रॉब्लम को पहले छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो एंड देन सॉल्व इट. ठीक है? नाउ tell me one thing. We have to find the index, correct? We have to find the index. Now when you have to find the index, okay, sorry, it should be C and C. I'm sorry, my bad. What is endl? Neeraj Kumar, endl is used to shift your problem or shift your input to the next line. Understood? चलो आगे चलते हैं. Now the step 3 is something like I have to store my indexes also. है ना? मेरा एक start index होगा because I have to map my things, not using the data structures वाला mapping system, but I have to map कि मेरा first occurrence कहाँ है और मेरा last occurrence कहाँ है. तो I have to store a starting index and ending index. ठीक है? तो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स करने के लिए आई हैव टू स्टोर 2 इंटीजर वैल्यूज, जिसमें कि मैं इंडेक्स का वैल्यू लिख दूंगा एज इंट स्टार्ट इंडेक्स एंड इंट एंड इंडेक्स. सो इंट स्टार्ट इंडेक्स इक्वल्स -1 एंड इंट एंड इंडेक्स equals -1. Now you are going to ask, sir, why is this -1? Okay. Now all the people who are watching, if you want these notes which I'm writing and the codes, join the Telegram channel which is there in the description below. Okay. So go and join the Telegram channel so that you can get the notes. Those who are there already, you will get them. Those who are not there, you have to join it so that I can give it to you. सर तेज तेज पढ़ो मतलब यू वांट मी टू स्पीक लाउडली? तेज बोलूं क्या? ये लो यार, माइक पास कर लिया, ये लो. ठीक है, इससे पास नहीं होगा माइक अब. ठीक है, मुंह पे आ गया बिल्कुल, अब इससे पास नहीं हो सकता. ये लो. ठीक है, अब ठीक है. Shubham Singh, there is no difference between \n and endl. कोई डिफरेंस नहीं है यार, सेम है दोनों, कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, चलो अब स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स. सर, व्हाई डिड यू डिक्लेयर द स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स एज 1? I am not new, sir. I am following Codeverse since it is created. Kailash, you are following Codeverse, but I am new on Codeverse, and for me, you are a new student. That's why I said that you are a new student. Like, you might be an old subscriber of Codeverse, but a new watching student of mine. So that's why I said that you are a new student and you can just join the Telegram channel if you want. So there are 2 different channels. There is one Codeverse ka channel, and there is one channel which I have of my own. तो मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए ही if you join my channel, then only you will get all these notes. I don't put it on all channels. सिर्फ मेरे चैनल पे I put my notes. ठीक है? So now what we are going to do? Why are we putting? Yes. रजत जोशी, correct question. -1 क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि we as default हम ये मान के चलते हैं कि what if I enter the string as कबीर. ठीक है? तो मैंने क्या किया? C out enter a string and C in string. अगर मैंने string enter किया कबीर and the character which I want to search मैंने enter किया X, तो वो तो है ही नहीं. कैरेक्टर X तो नाम में है ही नहीं, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? -1, because it is not there. So we take it as default, that as default take it as -1 and change the value later. ठीक है? No, string is not initially empty, Piyush Limba. It's actually there, but I default declare it as -1 and then change the value later if it is present, or else print the default value. ठीक है?
where int equals str dot last index of कहानी खत्म डॉट js. कहानी खत्म हो जाएगी महावीर, बट द प्रॉब्लम इज कि जो स्टूडेंट्स अभी सीखना शुरू करा है जिन्होंने, उनके लिए कहानी खत्म नहीं, फिर वो वीडियो खत्म हो जाएगी फिर. ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड. व्हाट विल बी द स्टेप 4? गाइज, मैं आई ऑलवेज टेक प्रॉब्लम्स वेरी स्लोली सो दैट आप लोगों को -1 ही क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट होता है यार. अगर हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं और वो नहीं मिलता ना, तो कोडिंग में डिफॉल्ट हम लोग -1 प्रिंट करा देते हैं. अब अगर मैं -5 प्रिंट कराता हूं तो देयर इज नो लॉजिक इन प्रिंटिंग -5. व्हाई आर मैं प्रिंटिंग? बस -1 शोज नेगेटिव, मींस इट्स नॉट देयर, समथिंग लाइक दैट. अंडरस्टूड? So now the step 4 is going to be, we are going to search the element. So for searching an element, string is a kind of an array, है ना. string में array की तरह ही elements हम डालते हैं ना. we store characters in strings. So how did we search elements in an array? Using for loop. same यहीं पे करेंगे. for I is equal to 0, I is less than, ठीक है. तो for I is equal to, no, string index number ही है यार, but it's like an array only. I is less than str dot length, string का length, ठीक है, and I plus plus. ये हो गया हमारा स्टेप 4, क्योंकि हमारे को सर्चिंग के लिए एक स्टेप लिखना था, वो है फॉर लूप. अब हमारा स्टेप 5 आता है, वेयर वी आर गोइंग टू सी दैट इफ, ओके, नाउ कम्स द स्टेप 5. इफ str I equals c, ठीक है, मीन्स इफ माई स्ट्रिंग का ith एलिमेंट और ith कैरेक्टर इज इक्वल टू c, विच इज द कैरेक्टर विच आई एम फाइंडिंग इन माई स्ट्रिंग, what am I going to do? Start index becomes I, because I will have to print the start index. So my start index is equal to I in that case. करेक्ट? समझ आया? अब what is happening? मेरा स्ट्रिंग, आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई डिजायर्ड कैरेक्टर, जहां पे भी मिला स्टार्ट इंडेक्स को हमने आई कर दिया, एंड देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि और कहीं पे वो मिलता ही नहीं. इफ आई फाइंड के इन कबीर, अगर मैं के को कबीर में ढूंढता हूं तो के मुझे सिर्फ यहां मिलेगा, तो स्टार्ट इंडेक्स भी 0 होगा और एंड इंडेक्स भी 0 होगा. यस और नो? सो व्हाट एम आई गोना डू? डिक्लेयर द एंड इंडेक्स ऑल्सो एज डिफॉल्ट. मतलब एंड इंडेक्स को भी मैं इनिशियली वही डिक्लेयर कर दूंगा जो मेरा स्टार्ट इंडेक्स है, जब तक मुझे कोई और एलिमेंट वहां पे नहीं मिल जाता. मतलब जब तक मुझे कहीं और ये एलिमेंट नहीं मिलता, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स सेम हो जाता है. करेक्ट? अंडरस्टूड? और अब मेरा फाइनल और मेरा 6th स्टेप जो होगा, which is going to be my last step for this problem, that is step number 6, and it is, now I have to print my string, कि मेरा string कहां पे है. तो अगर तो string, sorry, yeah, so if my start index is equal to -1, जो हमने इनिशियली डिक्लेयर किया था, तो हम सी आउट कर देंगे द कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग. ठीक है, एंड एल खत्म. बट अगर ऐसा नहीं होता, इफ दिस डज नॉट हैपन, -1 नहीं रहता और हमारा बेसिकली जो कैरेक्टर है वो मिल जाता है, तो एल्स हम क्या प्रिंट कर देंगे? सी आउट फर्स्ट अकरेंस will be start index and L
and see out second occurrence, last occurrence will be end index. Easy. एंडल कर देंगे, खत्म. समझ आया गाइस? स्टेप 5 समझ नहीं आया? ओके, देखो स्टेप 4 में हम लोगों ने क्या किया, फॉर लूप लगाया ताकि हम लोग हमारे स्ट्रिंग के अंदर चीजों को ढूंढे. एक सेकेंड. सो शुड वी यूज नेगेटिव नंबर इफ वी आर नॉट, वी आर सॉल्विंग? यस 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 मुनीब, यू हैव टू यूज नेगेटिव नंबर ओनली. नेगेटिव नंबर भी नहीं, -1 यूज करना. सर अगर वो इंडेक्स वो स्ट्रिंग में होगा ही नहीं तो वैल्यू -1 ही रह जाएगा ना. हाँ हाँ हाँ, तो वो वैल्यू -1 ही रह जाएगा. और अगर इक्वल टू -1 है तो प्रिंट हो जाएगा कि दिस इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, अगर वो इक्वल टू -1 है तो प्रिंट हो जाएगा कि वो है ही नहीं वहां पे. I'll do it. ठीक है, विल यू प्लीज रिपीट? आई एम डूइंग इट. वन सेकेंड, अभी सब कर रहे हैं. आई ड्राई रन इट एंटायरली. रुक जाओ, 2 सेकेंड रुको. एक बार रन करके देखें कि हमारा प्रोग्राम चल भी रहा है या नहीं. एंटर अ स्ट्रिंग, कबीर एंटर करते हैं. एंटर अ कैरेक्टर, एक्स एंटर करते हैं. द कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग. मैं थोड़ा इधर कर देता हूं आउटपुट को, सो दैट यू विल बी एबल टू सी. मैं वापस से रन करूंगा, वापस से कबीर लिखूंगा, इस बार प्रिंट करूंगा के द कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट. क्यों आया? क्योंकि यहां पे के कैपिटल था, यहां पे के स्मॉल था. वापस से एंटर करेंगे कबीर और के कैपिटल एंटर करेंगे. फाउंड एट अकरेंस 0, लास्ट अकरेंस 4. ओके, एक सेकेंड, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया है. गिव मी 1 sec. एक सेकेंड बस, ठीक है. ओ सॉरी, एक सेकेंड गाइस, गिव मी 1 sec. I'll just dry run it. एक सेकेंड, देयर वाज अ स्मॉल एरर इन द प्रोग्राम. पहले एक बार रन करके देखते हैं. ठीक है, लेट्स रन इट एंड सी. ओके, तो के 0 पे है और 0 पे है. एंड नाउ दिस 0 इज अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर्स कैलकुलेशन. सो आई कम डाउन एंड व्हेन आई एम प्रिंटिंग इट तो इसको इंडेक्स +1 कर देंगे ताकि हमारे काउंटिंग, ह्यूमन काउंटिंग के हिसाब से आए. अब रन करके देखते हैं. सो एंटर अ स्ट्रिंग कबीर, के पहले नंबर पे है और लास्ट भी फर्स्ट नंबर पे ही है. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट स्निप दिस कोड आउट. ठीक है, डिड यू गाइस अंडरस्टैंड टिल स्टेप 3? यस और नो? यू गाइस अंडरस्टूड टिल स्टेप 3 राइट? सिर्फ स्टेप 4 के बाद दिक्कत है. अब देखो, प्रिंट स्क्रीन करते हैं. We'll take it to our notes. ठीक है, देखो. Now I'll explain the entire code. मैं बताता हूं ये हो कैसे रहा है. ठीक है, I hope you're able to see, right? Yeah. कोड दिख रहा है ना गाइस? कोड दिख रहा है? देखो, अब स्टेप 4 हमारा ये है. ठीक है, अब ध्यान से देखना कि कोड में हो क्या रहा है. ठीक है यार, एक मिनट, ये लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द टेक्स्ट दैट आई रोट. एंड नाउ लुक एट दिस. ठीक है, 4 के आगे से समझा देना पूरा. ठीक है, अब देखो, पूरा समझा रहा हूं मैं. इस कोड में क्या हो रहा है? टिल स्टेप 3 हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनपुट लिया है. स्टेप 1 डिक्लेयर किया, स्टेप 2 इनपुट लिया और स्टेप 3
स्टार्ट इंडेक्स इक्वल टू -1, एंड इंडेक्स इक्वल टू -1, दैट्स ऑल। अभी तक इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स इक्वल टू -1 और एंड इंडेक्स इक्वल टू -1 डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, ताकि अगर वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो हमारे को -1 मिल जाए। सो आई गिव अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ -1 इन द फॉर्म ऑफ स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, सो दैट इफ इट इज नॉट देयर आई विल गेट अ -1, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, सिंपल सी बात है। फॉर इंट I is equal to 0, I is less than string I plus plus, this loop will run from the 0th index of my string, ठीक है। तो imagine my string is, मैं इसको ऊपर ही ले लेता हूं, Control Z, ठीक है। अब the thing is कि imagine I have to find K in Kabir, okay? तो मेरे को क्या करना है, KABIR में K ढूंढना है। Now the index will be as follows: 0, 1, 2, 3, 4. According to computer, R is on 4, I is on 3, B is on 2, A is on 1 and K is on 0. ठीक है, यस और नो। अब क्या करेंगे, लेट्स गो एंड सी। फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन str डॉट लेंथ, मतलब 1 2 3 4 5, तो str डॉट लेंथ हो जाएगा 5, तो str लेंथ हो जाएगा 5 I प्लस प्लस, ठीक है। हम अंदर आएंगे एंड वील सी इफ, ठीक है, look at this, okay? If stri equal c, c is k and str is Kabir, ठीक है। तो if stri equals k, देखते हैं क्या होता है। So my stri will be something like this. तो if पहला हो जाएगा I is equal to 0, तो str 0 equal c which is k, तो str 0 क्या है, k, तो this will be k equal k। ट्रू हो गया, it's true, means I will get an entry inside the if statement, है ना। मेरे को if statement के अंदर एंट्री मिल गई, एंड if स्टार्ट इंडेक्स इक्वल -1, यहां पे लिख लेते हैं स्टार्ट इंडेक्स, ओके ग्रीन पेन है नहीं दिखेगा यहां पे, 1 सेकेंड। स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स -1, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन थी इफ str 0 इक्वल c, तो str 0 k है, c मेरा k है, ये ट्रू हो गई। एंड इफ स्टार्ट इंडेक्स इक्वल -1, ऑब्वियसली मेरा भी स्टार्ट इंडेक्स इक्वल -1 है, देन स्टार्ट इंडेक्स इक्वल टू आई। अब स्टार्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये कट के इसकी वैल्यू हो जाएगी आई, एंड व्हेन आई गेट आउट ऑफ दिस लूप एंड इंडेक्स इक्वल टू आई, तो एंड इंडेक्स ऑल्सो विल बिकम 0, करेक्ट, अंडरस्टूड। एंड नाउ व्हेन आई गेट आउट ऑफ दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, ठीक है, ध्यान से देखना, जब मैं इन दोनों ब्रैकेट से निकलूंगा, यहां पे ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी I प्लस प्लस, तो I प्लस प्लस से हमारी वैल्यू 0 से चेंज होके 1 हो जाएगी, करेक्ट। वील कम बैक अगेन एंड वील चेक इफ stri इक्वल c, मतलब str1 इक्वल k है क्या, str1 है a इज नॉट इक्वल टू k, हमें एंट्री नहीं मिलेगी। ये पूरा स्टेप 5, ठीक है। अगर हमारा, आई बी वेरी क्लियर, इफ आर फर्स्ट इफ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आर एंटायर स्टेप 5 विल बी स्किप्ड, अंडरस्टूड। क्योंकि यहां पे एंट्री नहीं मिलेगी तो यहां नहीं जाओगे, यहां नहीं जाओगे तो ये नहीं होगा, तो पूरा स्टेप 5 स्किप हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे जब हमारी फॉल्स है,
तो अगेन वी विल स्किप इट एंड आई प्लस प्लस हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2. वापस से जाएंगे str2 इक्वल के एंड b इज नॉट इक्वल टू के. वापस से पूरा स्किप होगा और i प्लस प्लस होगा. str3 इक्वल के i इज नॉट इक्वल टू के. वापस से स्किप होगा और str4 चला जाएगा. str4 इक्वल के r इज नॉट इक्वल टू के. वापस से स्किप होगा, 5 चला जाएगा एंड यहां पे str लेंथ इज 5. तो ये अगर हमारा 5 है तो 5 हमारा i हो गया. 5 इज नॉट लेस देन 5. हमारा लूप खत्म हो जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे वी विल गेट एन आउटपुट एज स्टार्ट इंडेक्स इक्वल 0 एंड इंडेक्स इक्वल 0. मींस हमारा जो लूप है वी विल बी गेटिंग दिस as my first and this as my last. So k is only and only present over here. समझ आया? Yes or no? जल्दी yes or no in the chat लिख दो जल्दी से. जल्दी से yes or no in the chat. Come on. Okay, everybody understood? Every single student understood what I taught? So now if I go back and I run it again, I just kill this terminal and I make a new terminal and I just run it up again and I write something like another string. So let me say code verse. So let's type codeverse. So code verse and I find e. So starting the first e is present on the 4th and the last e is present on the 9th. Obviously it's correct. Understood? Yes or no, people? Come on, give me a yes or no. What if 3 same letters? Yeah, Piyush Lamba, 3 same letters are there. There are 3 E's in code verse. So you will get the first occurrence and the last occurrence in this program. So the first occurrence is on 4 and the last occurrence is on 9. Notes, if you see the notes, you will be able to understand the entire thing now. Okay, let's go to the problem 2 now. Level 1, problem 2. Let's go to the second problem. So what is the second problem? Print a string entered by a user. Very easy, not that difficult. What are we going to do? Just go over here. It's very easy. Level 1 का problem है. So pretty easy. Question 2 dot cpp. Write a Kabir. String str cout. Enter a string. cin str cout the string you
entered is, okay, sorry, I'll go here, str and l. ठीक है, easy. Just have to enter a string. I'll write coding and I'll get the string you entered as coding. Simple, not a very big question. Very simple problem which you have here. So let's go to the next problem. I'll just print screen this and put it in the notes so that you guys have it. Okay, Control Z. Okay, let's go to the third problem now. Guys, easy. Was the second problem easy? It was just a normal input problem. Okay, let's go to the third problem. Print every character of a string. This is a good question. This is a good question. Print every character of a string. What is cin? Ganpat, cin is basically input statement for C++. Okay. Can anybody tell me how we can solve this problem? Tell me, how can we solve this problem? How can we find the number of elements in my string? So, sorry, not the number of elements. We have to print every character. Hamza, Mayan, I have actually taken a special course for it on Easy Code. I have already taught you guys that, so you can go and have a look. Question 3.cpp. It's a very easy question. So basically what I have to do is just give you a string, that is string str, cout, enter a string, and then I'll just cin str, and then I'll just go here and I'll write for int I is equal to 0, I is less than str dot length I plus plus, and I'll go inside the loop and I'll write cout str I and l. That's all. So basically the way we used to print an array, we can print a string simply. I'll just run it up and show it to you. 1 second. Okay, my bad. I forgot the parentheses over there. Enter a string. I'll just write Kabir Singh codes. So you get the entire Kabir Singh codes, every character printed out. Easy? Is this easy, guys?
Tell me guys, did you guys understand? I'll print screen this and I'll put it in the notes. Okay, a wrong screenshot. I did not put the entire code, so print screen, paste it over here, done. Okay, let's go to the next question, guys. Are you ready for the next question? Fourth question in the list. Syntax. नीरज कुमार, सिंटैक्स का डिफरेंस है बेसिकली. इफ यू यूज str.length and parentheses, it's right. str.length and not using the parentheses is wrong. The wrong syntax. Yeah, I'm going to do that, Muneeb. Don't worry about that. So, which is the fourth question that I've planned? Display the sentence I love coding. Pretty easy to solve. Let's go and do it directly. Not much of an issue. Just printing a string. Very easy. So, let's write question 4.cpp. Come on, give me the answer to this, guys. It's a one-line question. How do you print I love coding? Where are the notes? Javier Vargas, the notes will be sent to the Telegram channel. The link to the Telegram channel is there in the description below. Just join the Telegram channel called as Kabir Singh Codes. So there are different channels in the description, but the channel under GitHub. Okay, so the channel under GitHub is Kabir Singh Codes. Go join it. I'll send the notes over there. सी आउट कर दो सर. यस, सिंपल कोड है यार. सी आउट आई लव कोडिंग. दैट्स ऑल. वेरी गुड श्रेयांश कुमार. So these questions I generally put up so that you guys can kind of get into the form again. Okay, why didn't we? Okay, I got it. I love coding. Okay, so Preeti, you don't have to declare it as, yeah, you can do that, do it that way also if you're learning strings. Very good approach that you used, but if you directly do it, see out I love coding, you can get that also. Okay, so now it's already 59. I give you a dot 15 minutes break, guys. 15 minutes break. I will see you again at 5:15 now. Go and have your coffee, your tea, talk to your people, chat on WhatsApp, Instagram, do whatever you want to do. Send your streaks on Snapchat, but come back in 15 minutes. I will be sending you the link on Telegram channel. Join the Telegram channel, or else you can just stay on the channel. Keep refreshing it at 5:15 if you want the link. You'll get it. We'll see you again at 5:15 and have fun solving more questions. Okay. So take care, people. Have a nice 15-minute break and come back soon. I want everybody, Rajat, then Ganpat, Preeti, Muneeb, Piyush, Shreyansh, Jaivir, Muneeb, then Neeraj Kumar, everybody. I want you back in 15 minutes. And have a nice 15 minutes break. See you guys soon. And I will be sending the notes after the next session. Okay. So thank you so much for joining in. See you in 15 minutes. Bye-bye.